एंड वैल्यूज +3 फर्स्ट सेमिस्टर 8 नंबर क्लास पे क्लास नंबर 8 आम पाखापाखि 50% कोर्स सारिबा उपरे बहीटा आउ 8-10टा क्लास भितर पाठ सरीज आमर तो आम या पूर्व पढ़ी थे कौन पिले चाइल्ड मैरिज पढ़ी थे तापर आम पढ़ी थे वुमेन राइट्स से विषय भी पढ़ी थे तो आज आम पढ़ा वुमेन एंड फैमिली वायलेंस वुमेन एंड फैमिली वायलेंस तो जो हिंसा हो पारिवारिक हिंसा स्त्री मान प्रति होता पारिवारिक हिंसा तार फॉर्म से सब कौन कौन हो जिन सब पढ़ा पे सो families are nurturing and need fulfilling places for children and adults. What is a family? A family is nothing but are nurturing and need fulfilling places for children. माने छुआ बढ़िबा पई छुआर आवश्यकता बा परिवार आवश्यकता मेंटेबा पई जो गोटे अनुष्ठान थाए ताको हम परिवार बोली कहि थाउ पिले and adults. It is expected that members enjoy a maximum safety and security within the four walls of their houses. And it is expected that members enjoy maximum safety and security निरापद एवं निरापत्ता within the four walls of their houses. घर चारिकांथ भितर फैमिली प्रत्येक सदस्य निजक निरापद एवं सुरक्षित मन करते बट मेनी ए टाइम बहुत समय अधिकांश समय कौन हुए पिले चिल्ड्रेन एनकाउंटर वायलेंस विद इन देयर फैमिलीज छुआ माने माने हिंसार सामना करने को पड़ी था छुआ मान को हैं एंड वायलेंस पॉल्यूट्स द फैमिली एनवायरनमेंट एंड बाय दिस वायलेंस द फैमिली एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड परिवार जो माने परिवार परिवेशटा प्रदूषित होता है कलुषित होता है इट प्रिवेंट्स द फैमिली फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन फॉर द मेंबर्स and by this what happens it prevents the family from performing its function for the members माने परिवार रो सदस्य मान प्रति परिवार जो कर्तव्य से कर्तव्यटा एठी हानि ही थाए बिले violence within the family environment has a negative impact on children and if in a particular family violence is getting repeated it has negative impact on children छुआ मान को ऊपर यार नेगेटिव प्रभाव पड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ी था and further it erodes victim trust in and dependence on families as source of security. It is often seen that girl and women become victim of violence at home and it is often seems that girls and women become victims of violence at home. झियो माने स्त्री माने पारिवारिक हिंसार बहुत शिकार ही थामते दिस ब्रिंग discrimination and upon violates their human rights and by this family violences what happens they feels first of all discrimination भेदभाव सृष्टि हुए and it violates their human rights सेमानक मानव अधिकार उल्लंघन ही थाए जगह women are treated as powerless and less valuable in families and women are treated as powerless and less valuable in families whereas men are treated as powerful and more valuable in Indian family system especially झियो मानकु स्त्री मानकु कौन करा जाए से मानकु माने शक्तिहीन अबला दुर्बला बोले के कहा जाय था whereas men are treated as powerful and more valuable पुरुष मानकु शक्तिशाली एवं बहुत मूल्यवान बोली भी धरा जाता है बिले violence within the family environment has a harmful impact on children and as I have already told you earlier violence has harmful impact on children ए violence रो बहुत क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है कहा ऊपर छुआ मानक ऊपर violence faced by girls and women take many subtle forms and violence especially faced by girls and women in a family has many subtle forms subtle subtle stand for गुप्त माने माने एभली भाव रे घटे
कि जना पड़े ना तो बर्तमान गोटे गोटे करी आम आलोचना करवा कौन से सटल फॉर्म गुड़िक कौ भाई भाव में कौ प्रकार हिंसा सब संगठित होता है परिवार भितर स्पेशली झील मान सहित एवं स्त्री मान सहित। प्रथम जिनस है डाउरी डेथ, नोट इट डाउन, डाउरी डेथ यौतुक जनित हत्या। So as we have discussed earlier, marriage is a sacred institution in Indian society. We have already discussed. Here, a woman is welcomed into the life of a man to build family and to perform the social function of procreation and the religious task of yajna. Especially when a man married a woman. At that time, this called marriage and that institution is considered sacred in India. याको पवित्र बंधन बोलिकी कहा जाता है। आउ आफ्टर गेटिंग मैरिज द मैन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञस एंड वेरियस रिलीजियस राइट्स। धार्मिक अनुष्ठान पाई योग्य विवेचित होता है बाहा हैला परे पुरुष जनक, अविवाहित लोक करि पारे नहीं आम जानी थिबा। बट दिस इज नाउ फॉलोड बाय द अगली प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। बट नाउडेज व्हाट हैपेंस, दिस सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज is being polluted due to demand of dowry. যৌতুক प्रथा लगी ये जो पवित्र बंधनटा वर्तमान कलुषित हेबारे लागिलानी। Dowry reflects and greed of the groom's parents and the groom. So dowry reflects the greed of groom, greed कहले लोभ, बरर लोभ, and greed of the groom's families, बरर परिवार लोभ ये যৌতুक ही जना पड़ी था पिले। Who extract cash or gift from the bride's family, and the groom himself or his family members, they always try to extract money, kadhiba money or cash or anything, wealth or etc from the bride's families. When this greed is not satisfied, jete bele ei lobhota माने से लोकटा संतुष्ट हुए ना, माने स्त्री जो सब जिनस आणिकी आसे से साटिस्फाइड जो हुए ना, द न्यूली मैरिड वुमेन बिकम्स ए विक्टिम ऑफ डाउरी टॉर्चर। से नवविवाहिता वधू, दैट लेडी हु इज न्यूली बीइंग मैरिड एंड हैज कम वाज टॉर्चर्ड। दिस इज कॉल्ड डाउरी टॉर्चर। यौतुक जनित जंत्रणा भोग करे and may end up being murdered, even if it has such type of violence that the lady may get murder, even if से स्त्री को मर्डर भी कर दिया जाई पारे। यौतुक जनित जंत्रणा बा यौतुक जनित हत्या बोली जाऊ कहूँ पिले। Dowry deaths are death of married women who are murdered or driven to suicide by continuous harassment and torture by their husbands, in-laws over a dispute about their dowry. This is the definition. So what is it? Dowry deaths are death of married women who are murdered or driven to suicide. So যৌতুক জনিত হত্যা হচ্ছে সেই হত্যা যাহ যোউঠিরে কম हुए जड़े विवाहित महिला को हत्या करा जाए किंबा हत्या माने से सुइसाइड आत्महत्या करने प्रवर्ता जाए बाय कंटिन्यूअस हारेसमेंट, माने अविरत भावे जन को जदि जंत्रणा दिया जाए, कष्ट दिया जाए, से केते सहिबो है। हरेसमेंट एंड टॉर्चर बाय देयर हस्बैंड, कहा द्वारा? स्वामी द्वारा, हस्बैंड्स एंड इन-लॉज, स्वामी परिवार द्वारा, सेटा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, व्हेवर इट मे बी, इन-लॉज ओवर अ डिस्प्यूट अबाउट देयर डाउरी। कौन पाई? यौतुक जनित डिस्प्यूट पाई बा समस्या पाई। सेक्शन 304B of the Indian Penal Code, IPC जागू कहूचे, IPC रो 304B अनुसार defines dowry death as the death of a woman caused by burns or bodily injury or which occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage. Within 7 years of marriage of a lady, if any death occur, जदि से स्त्री रो मृत्यु होई थाए, and any injury or burns occurred in the body of the lady, जदि से झीर किंबा बहुर शरीर रे कौनसी पोड़ा दाग, कटा दाग किंबा क्षत थाए, एठी कौन हुए पिले?
This is considered as dowry death, dowry murder. And dowry death are on the rise in the country in 2011. ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଡାଉରି ଡେଥ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2019 ମସିହାର ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଯାହା କହେ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯାହା କହେ, in 2019 alone କେବଳ 2019 ମସିହାରେ 7,115 cases of dowry deaths were registered under 304 section B. IPC ର 304 B ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। କେତେଟା କେସ୍? 7,115 କେସ୍ କେବଳ 2019 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଡାଉରି ଡେଥ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅନର କିଲିଂ ବା ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନର କିଲିଂ। Honor killing is the murder of an individual either by an outsider or member of a family. So, honor killing, what is honor killing? Honor killing is the murder of an individual, जड़े व्यक्ति विशेष को हत्या करिबा either by an outsider or a member of family. सेटा जड़े अन्य जन को भड़ाटिया गुंडा द्वारा ही थाउ किंबा परिवार रो लोकंक द्वारा ही थाउ। Most often, प्राय अधिकांश समय रे most often it involves the murder of a woman girl by male family members. माने परिवार रो जड़े पुरुष सदस्यंक द्वारा जड़े झियो किंबा स्त्री को मारिबा नॉर्मली honor killing बोली आमे कहता हूँ। And who act on the belief that the victim has brought dishonor or shame upon the family. Why this happens? Because that girl or that lady was involved in such an action that caused dishonor, that brought dishonor and shame upon the family. तो परिवार सदस्य माने भावी थांती जे से स्त्री किंबा से झियो पाई परिवार सम्मान हानि हैला, परिवार स्टेटस हानि हैला, जहाँ फल से झियो किंबा स्त्री को मर्डर कर जाए थाए ताहाको आमे कौन कहू ऑनर किलिंग बोली कही था। देयर आर वेरियस मोटिव्स बिहाइंड ऑनर किलिंग। आउ यार मोटिव सब जदि आमे देखिबा, रीजन सब जदि देखिबा, देयर आर वेरियस मोटिव्स, वेरियस मोटिव्स आर देयर बिहाइंड ऑनर किलिंग सच एज लव मैरिज। प्रथम कारण होची प्रेम विवाह, अदर कास्ट मैरिज जो हुए पिले गोटे झील भल पाई अलगा कास्ट गोटे पिला को बाहे गला, गोटे पुओ बाहे माने अदर कास्ट झील को बाहे गला, एटा होची प्रथम। सेकेंड है इंटर कास्ट मैरिज, अलगा कास्ट रे विवाह करवा। थर्ड है होमोसेक्सुअलिटी, माने सेम जेंडर भितर जो सेक्सुअल अट्रैक्शन रहे होमोसेक्सुअलिटी। देन डाइवोर्स, छाड़पत्र। देन डिजर्विंग एल्डर्स, बापा माँ कथा न मानिक विवाह करवा। देन आर्गुइंग विथ एल्डर्स, बड़ लोक मान सहित जुक्ति करवा। देन चॉइस ऑफ क्लॉथेस, इवेन इफ माने छोट कपड़ा पिंधिबा, मॉडर्न लुगा यूज करवा। देन रोमिंग विथ पीपल, लोक मान सहित बुलिबा, मार्केट रे से बुलुथला अमुक सहित, रोमिंग विथ पीपल। देन स्टेइंग अवे फ्रॉम होम टिल लेट नाइट, इवेन इफ ए भलिया केस सब भी रेकर्ड होईची द झियो पिलाटा राति रे लेट रे आसिला बोली के फैमिली लोक ताको मर्डर करि दैछन्ते। सो दीज आर द केसेस। मु आउ थरे कहूची, प्रथम जिनस होची लव मैरिज, सेकेंड जिनस हला इंटरकास्ट मैरिज, थर्ड जिनस हला होमोसेक्सुअलिटी, फोर्थ जिनस हला डाइवोर्स, फिफ्थ जिनस हला डिजर्विंग एल्डर्स, सिक्स्थ जिनस हला आर्गुइंग विथ एल्डर्स, सेवन चॉइस ऑफ क्लॉथेस, एट रोमिंग विथ पीपल, 9 staying away from home till late night. So these are the reason why honor killing do offense in our society. Surprisingly, आश्चर्यजनक भावे, surprisingly, when a male child or member does anything that affects the honor of the family, जेते बेले एटा थिला गोटे झियो जेते बेले भूल करे किंबा स्त्री जेते बेले भूल करे, किंतु जेते बेले पुरुष भूल करे, when a male child or a member does anything that affects the honor of the family, जेते बेले परिवार प्रति माने कोनोसी सम्मान हानि हुए पुरुष मानक द्वारा, he is not murder in the name of honor. से जगह ताकू हत्या करा जाए नहीं, in the name of honor nobody thinks about him. पुओ पिला षंड जा कला ए भलिया गोटे थिंकिंग अछि। This practice of killing girls in the name of honor is clear reflection of gender violence, and this practice of in the name of honor, or this killing in the name of honor is a clear reflection of gender violence. तो ए प्रैक्टिस ए प्रथा द्वारा कौन होची लिंगगत
विभेदता जना पड़ुछि पिले तापर आइला पिले फेमिसाइड फेमिसाइड कहले कौन गोटे स्त्री हत्या बा झील को हत्या करवा फेमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ए वुमेन और ए गर्ल फेमिसाइड इज व्हाट इट इज द किलिंग ऑफ ए वुमेन और गर्ल इज कॉल्ड फेमिसाइड इन पर्टिकुलर बाय ए मेन ऑन अकाउंट ऑफ हर जेंडर केवल से स्त्री बोली ताको हत्या करवा मोस्ट केसेस ऑफ फेमिसाइड आर कमिटेड बाय पार्टनर्स और एक्स पार्टनर किए गोटे भल पाला झील को झीलटा को से झील आउ क्या सहित कथा मर्डर करदेला दिस इज कॉल्ड फेमिसाइड मोस्ट केसेस ऑफ फेमिसाइड आर कमिटेड बाय पार्टनर्स और एक्स पार्टनर माने स्वामी किंबा एक्स you can understand what do I mean by X. So it involves ongoing abuse at home, threats, sexual violence, or situation where women have less power or fewer resources than their partners to protect themselves. The reverse hardly takes place. So when a man normally sees a woman with other people, he gets angry and killed. Normally, if I'll give another example, when a lover sees beloved with another boy, at that time gets angry and killed. This is normally called, femicide. But in the contrary, ये जगह केवे झील पुओ को मारे नहीं जदि हेइची कोटिरे गोटे बाइचान्स केवे हेइची तापर आइला बेले डोमेस्टिक वायलेंस ये थिला फेमिसाइड तापर आइला डोमेस्टिक वायलेंस one of the most heinous crime against women is the violence that they experience at home heinous कहले घृण्य माने सबुठारु घृण्य जिंस जहाँ परिवार भितर घटी थाए पिले क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज द वायलेंस दैट दे एक्सपीरियंस एट होम घरे ही थाए एटा घरे ही थाए हैं in most cases maximum case रे it is committed by their intimate partners and this violence is committed by their intimate partners जो मान को सहित से माने intimate होंती close होइतांती से माने ही करम देटा in most cases domestic violence is manifested in many forms such as sexual physical or psychological and domestic violence have three different mood one is it may be sexual harassment sexual violation it may be physical violation it may be psychological violation anything can be there and research has established according to the research has established that there exists a direct and significant correlation between a country's level of gender equality and rates of domestic violence and it especially this domestic violence depends upon gender equality in the country where gender equality rates is high domestic violence is low in the country where gender equality rate is low domestic violence is high मन रखिबा जिनसटा countries with less gender equality experience higher rates of domestic violence and domestic violence goes mostly unreported or underreported and this domestic violence in maximum cases go unreported or underreported ए माने लोकलोचन को आसी पारे नाही सब बेले स्त्री माने ही सफर करि थांती आउ जेहेतु बाहर जदि कहिबे काहाकू जदि कहिबे परिवार रो सम्मान हानि हबो सेथि पई से झियो माने किमा स्त्री माने ताकू निजे सही जामते जहा फल रे सेमान ऊपर पुनी थोर अत्याचार बढ़ी जाए एथिला डोमेस्टिक वायलेंस पहिले नेक्स्ट पॉइंट रो अछि चाइल्ड मैरिज और फोर्स्ड मैरिज बाल्य विवाह बा बलपूर्वक विवाह करे दबा सो चाइल्ड मैरिज हैव बीन डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली इन दिस चैप्टर हमें पढ़ी सारी छे फोर्स्ड मैरिज मींस फोर्सिंग ए गर्ल टू गेट मैरिड विदाउट हर कंसेंट सो व्हाट इज फोर्स्ड मैरिज इज नथिंग बट मैरिज टू गेट मैरिड विदाउट हर कंसेंट ए गर्ल व्हेन ए गर्ल मैरिड विदाउट हर कंसेंट तार बिना सहमत रे जतबे गोटे झियो विवाह करे ताकू आम कौन कहबा फोर्स्ड मैरिज बोली कहा जिवो फोर्स्ड मैरिज इज ए मैरिज इन व्हिच वन and both parties have not personally expressed their full and free consent to the union. So when it will be called a forced marriage, a marriage will be called a forced marriage when both of them means maybe a girl, maybe the boy, when their consent is not taken and their consent is not considered
तांकर जेतेबेले सहमति निया जाई न थाए एवं बिना इच्छा रे विदाउट देयर विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ गर्ल एंड बॉय द मैरिज हैपेंस, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड द फोर्स मैरिज. And a child marriage is considered to be a form of forced marriage. Child marriage is considered to be a form of forced marriage. तो ये शिशु विवाह बा बाल्य विवाह को भी ए बलपूर्वक विवाह रो गोटे माने ब्रांच बोली की कहा जाए. इन इंडिया भारत रे स्पेशली forced marriage are illegal under Article 15 of Indian Contract Act 1872. 1872 मसीह जो इंडियन कंट्राक्ट एक्ट होती तार आर्टिकल 15 अनुसार ये जो रहिला फोर्स्ड मैरिज टा कंप्लीटली इलीगल, बिना इच्छा रे बिना सहमति रे किए काहाकू विवाह करि परिबो नाही कि करई परिबो नाही. इट इज ए वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दिस इज कंसीडर्ड एज वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानविक अधिकार उल्लंघन बोली याकू कहा जाए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे प्रावधान अछि कोन बिले ग्रांट्स राइट टू लिबर्टी स्वाधीनतार अधिकार एंड चॉइस पसंद अधिकार of living life to all under Article 21. If we look at Article 21 of Indian Constitution, it provides us what? Grants right to liberty and choice of living. Liberty of choice and living. Article 21 of our Constitution. तापर आइला पिले आउ गोटे जिंस होची हमर होची फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन. फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कोन? Forced sterilization occurs when a woman is sterilized after expressly refusing to undergo the procedure. When a lady is prohibiting to take sterilization or be sterilized and she was forced by the family member to go underway the sterilization process. Sterilization को ले बंध्या करना पड़े. Sterilized after expressing refuse to undergo the procedure without her knowledge or when she is not provided an opportunity to give her consent. When she was not being asked, ताको पोचरा जाए नहीं, सीधा सीधा ताको sterilize कर दिया जाए, operation कर दिया जाए. So this is what, this is also a kind of violence being felt or undergo by Indian women. When she is not provided, okay. Forced sterilization take place in large number across countries. भारत रे बहुत संख्या रे ए forced sterilization होचे. It was very important during the World War II. द्वितीय विश्व युद्ध समय रे ए जिनसटा बहु प्रचलित थिला. इन नाजी जर्मनी नाजी माने जर्मन में जानी थिबा जर्मन 4 लाख men and women were forcibly sterilized. 4 लाख स्त्री एवं पुरुषों को फोर्सिबली स्टेरिलाइज करा जाइतिला द्वितीय विश्व युद्ध समय रे. इट इज ए बार्बरिक प्रैक्टिस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ए वुमेन इन लार्ज मेजर. और एटा होची एक घृण्य परंपरा, एक घृण्य प्रथा जहाँ स्त्री को मानसिक एवं शारीरिक भाव रे आघात देई थाए. इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द चॉइस एंड डिसीजन ऑफ द वुमेन एंड इट टेक्स प्लेस एट अ केमिति वे अगेंस्ट द चॉइस and decision of women, and it doesn't honor the reproductive rights of the women. Women have reproductive rights also, and it violates the reproductive rights of women. Then comes forced nudity. Forced nudity, nagnata, बलपूर्वक जन को नग्न करिबा बा forced nudity. Forced nudity is a state of undress that is imposed on an individual. जन को जते बेले माने बाध्य बाधकता रे तार ड्रेस उतारिबा पई कहा जाय पेले. That is called forced nudity. This is a form of violence often perpetrated against women, and normally this violence occurs with whom? With women. It may occur when a woman's clothes are manually removed from her body by other people, or when a woman is ordered to take off her clothes. So this can be of two types. One is when she was ordered to take off her clothes. Another can be when somebody takes off her clothes. And forced nudity can refer to both partial and total nudity, and it can be considered partial and total. In some cases partial nudity is there, in some cases full nudity is there. This also happens in public spaces. ए घटना public space रे भी हेई थाए. शेष जिंस होची marital rape.
Marital rape involves sexual intercourse with a wife by her husband without her consent. When sexual intercourse do occurs without the consent of wife by a husband, this is also a crime. Remember this. Marital rape is considered a form of domestic violence and abuse. And marital rape is considered a form of domestic violence and abuse. याकू भी domestic violence और abuse आकार रे सरकार स्वीकृति देइचंती याकू या एटा भी दंडनीय अपराध. This form of rape is more widely experienced by women, and this form of rape बाजा को हम धर्षण बोली कहूँ, it is maximum in maximum cases this is experienced by whom? The women. Marital rape is often a chronic form of violence for the victim. Chronic form of violence लगातार वर्ष धरी चली था पहले, किंतु निजे निजर इज्जत बंचेबा पई परिवार स्टाटस को देखिकी केबे महिला माने स्त्री माने मुह खोलमते नहीं. Which takes place with the sphere of intimate relation. Women in India do face frequent incidents of discrimination and violence in the household, and marital rape is most common across age, caste and class. And this marital rape in India especially is more common if you look at the caste, class and age. That's all for the day. आजिर क्लास शेष होइछि पिले. नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा आसंता काली वुमेन एंड वर्क. थैंक यू फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून मास्टर इंग्लिश. बाय बाय.